तो बताइए, अदरवाइज गो टू द नेक्स्ट। सर एनफोर्समेंट कब तक होगा? एनफोर्समेंट हो रहा है ना? हाँ, सुना नहीं आपने? ऐसे करके आप बैठे हो, लगता है कि सुना नहीं ठीक से आपने। मैंने सुना सर, ये मैं बता रहा हूँ, सुनो। हमने कहा कि उनको 13 तारीख को बुला के समझा दिया। सो एनफोर्समेंट हैज बिगन. So I told you we take a soft approach. Then on 28th, which is day before yesterday, we wrote a rather tough letter. We said, please don't indulge. Otherwise, we'll take action. We are now taking complaints and we'll pass it on to the authority. So do we have adequate rules and laws on this? Yeah. Yes. Yes. What दिखाया ना? So we have the broad framework is Consumer Protection Act. Under that, there is a paradigm of unfair trading practice, where as part of that definition, manipulating consumers' choices is an unfair trading practice. This squarely falls in that domain of manipulating consumer choices. Maybe after a couple of months, we'll also issue specific guidelines, just as we did in misleading advertisements. This is 1 year imprisonment. Up to है. Up to 1 year. हाँ, you can penalize in here. और आपने उस दिन 13 जून जब मीटिंग किया, उन्होंने क्या बोला? जब उन्होंने बोला कि दे अग्रीड करते हैं एग्री नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या बोला उस दिन। अनुपम जी ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया, मतलब एवरीबॉडी वाज वहाँ इम्प्रेस्ड विद द प्रेजेंटेशन. इट वाज अ वर्जन ऑफ दिस प्रेजेंटेशन एंड ये आज को इन्हीं को करना था, लेकिन मैंने आज इनकी थोड़ा छीन लिया इनका मौका. बट दे अग्रीड कि यस, दिस इज अ प्रॉब्लम एंड सर वी विल लुक इनटू दिस एंड वी विल नॉट ड्यूप आवर कस्टमर्स. बट जैसा कि ऐतिहासिक रूप से विदित है, कथनी और करनी में कई बार थोड़ा फर्क होता है. सो दैट इज व्हाई वी आर देयर. वी मीनिंग द अथॉरिटी, द मिनिस्ट्री, द हेल्पलाइन, एवरीथिंग इज देयर. And we also, of course, you are our eyes and ears. So have there been any complaints so far, or it's your motto you have? अभी थोड़ा misleading ads, misleading के में आती हैं, but we are yet to classify them as dark patterns. We'll start it doing now. So 1915, so we'll start, like I told the gentleman here, by 31st July, we'll have what percentages of our complaints are falling into that bucket. And then pick. अभी भी आती होंगी, but अभी हमने ये वाला classification शुरू नहीं किया था because we were not ourselves aware. But then we started reading what is happening in other geographies, other countries, and we realized that this is a separate, addressable big problem. So it's a dynamic thing, because online is a dynamic thing. So based on that, you identified looking at Right. that is the 9 patterns that you So identified. we identified 9 patterns. We told the industry that as far as we are concerned, these are dark patterns. Please don't indulge in this. The industry listened. A copy of that presentation, which has similar slides to this presentation, was given to everyone. It has been emailed to them. As a follow-up, after 15 days, 13 plus 15, 28, so we wrote कि आपको उस दिन बताया था, अब भाई थोड़ा अगर कर रहे हैं तो मत करिए, otherwise we'll start taking action. That is a of course. More than 9. So we gave them a broad idea that what is a manipulative pattern. These are examples. There may be more. And as I said, some people are more innovative than others. So they may give. पेनल्टी कितनी लग सकती है तब? बताइए चेयरमैन साहब. तो इसमें जो है वो जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है ना, वो चूंकि वायलेटिव ऑफ कंज्यूमर राइट्स भी है, इसलिए इसमें हम सीधे उनको मतलब जो जेल का प्रावधान है वो करेंगे, बिकॉज पेनल्टी इज अ वेरी स्मॉल थिंग, यू नो, इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट. और दूसरा ये कि वी कैन आल्सो डायरेक्ट देम टू डिसकंटिन्यू व्हाटएवर दे आर डूइंग, बिकॉज नेशनली I mean, if you see on a scale, they are doing it, you know, to so many people, and people do not recognize that they are being scammed. Or what is the word for, you know, this kind of scamming which is going on? तो कई बार लोग ऐसे सोचते हैं कि ये उनकी marketing strategy है, जबकि it is not. You know, so it is not a fair trading practice. Hello, action होगा. Don't worry on that. So do you plan to go by sector-wise, like airlines, where we maximum see you? It is quite visible also. So rather than picking and choosing from different, it's very difficult. Very good question. So, like we did it for social influencers, we first issue generic, like we did for influencers, that you have to disclose. Then we realized that health and finance, there are specific issues.
So now we'll soon be launching guidelines for them. We've done stakeholder consultations with the health ministry and other stakeholders. So we'll follow the same approach. Because on e-commerce sites, when you're paying for either a good or service, like the example of online gaming, which the gentleman said the kids are getting trapped. So when you're paying something, then you need to be careful about whether the guy who's selling is going to manipulate you. It's a general problem. But problem of extra charges is more prevalent, you are right, in the travel and hospitality sector. So we'll go to that. And also on the e-commerce. इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट रहेगा ऐसे सेंटर मतलब कर सकते हैं. You can also, so for any of the things, you can also file a case. If somebody is indulging in unfair trading practice, it's a violation of the act. So you can also go to the consumer commissions, which are at the district level, state level, and the national level, depending on the pecuniary, jurisdiction and the amount involved. So health and finance guidelines, sorry, I didn't understand. Could you please explain that again? You said you'll be coming out with guidelines in the health and finance sector. So what I said was, we already have issued guidelines for social influencers, that if you have 20,000 followers or 5 million followers or whatever that number is, if you are endorsing a product and if you have taken money for that or a material benefit, then you have to disclose that. That guidelines is issued. That is already prevalent. We have had 2 sessions with the influencers in Bombay and Delhi, or both in Bombay. Both in Bombay. And we called all of them in a room like this, and we said, "Ki bhai, you are young people. We respect, your way of making money, and this is a good part of the economy. But don't fool the consumer. If you have taken money, please say that." That is one. Then we did further more due diligence, and we realized that in health and finance, this malaise, this disease is more accentuated. Because health के कोई भी साहब कोट पहन के, मैंने भी पहना हुआ आज, कि बोलते हैं कि साहब ये वाला प्रोटीन खाने से बहुत अच्छा हो जाएगा. So we are just asking them कि भाई आप बोल रहे हो, are you a doctor? Are you a nutritionist? How are you saying this? Of course, you can say general thing कि रोज सुबह walk करिए, exercise करिए, yoga करिए. That is general. But if you are endorsing a specific protein or a specific chemical, then you have to disclose whether you are a doctor or not. Number one. In finance side, because you are asking people to invest in favor of a particular mutual fund or a stock or any form of investment, then you have to disclose your connect. So all this, the name for them is finfluencers. We came to know last week that ये भी एक नया term है. So finfluencers के लिए, but the good thing there is, SEBI, we are in touch with them, and they are already acting on this. And if you read today's Hindustan Times, it says that Madam, क्या नाम है उनका, chairperson, Bush, Nirmala, not Nirmala, the other one. So she's already started a consultation process on this, and they will put this in public domain for 2 months. So we will do it jointly with them. I mean, we don't want to work at cross purposes. I hope that answers the question. Is there any particular guidelines for this issue of dark patterns that you? तो अभी तो general है कि we told them कि these are, but then we'll get into more specifics because we also need to do research. हमको भी, जैसा मैंने इनके प्रश्न के जवाब में बोला, हमको भी इन 9 के अलावा भी जो exist कर रहे हैं, तो what we'll do is by 31st July we'll have some idea on 1915, and by doing research, by comparing notes with other countries, कि और क्या-क्या issues हैं, and then we'll make a, otherwise क्या होगा, अभी गाइडलाइन इशू कर दी, फिर पता लगा ये एक नया ऐड करना है. सो अभी उनको जनरल बता दिया है कि ये रेड लाइट है ट्रैफिक की, इसको क्रॉस करना अपराध है. And then we'll get into more details. In 97% of 75 popular e-commerce जो आपने बोला, इसमें इंडियन यूजर कितना है, कुछ डेटा है? वो नहीं हमारा. और ये including गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइक IRCTC, वो हमको नहीं पता. यूरोपियन यूनियन की स्टडी थी. अभी तक किसी सोशल मीडिया यूरोप की. पर एक्शन हुआ है? ये हमारा नहीं, यूरोपियन यूनियन. अभी तो एडवाइजरी है. है. शुरू में मतलब ये ओवरऑल एकदम से एक्शन नहीं लेते हैं, बट अगर आपने कल के अखबार पढ़े हो और आज के पढ़े हो,
तो करीब 15 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो अपनी विदेश यात्राओं की तस्वीरें डाल रहे थे, उनको इनकम टैक्स विभाग से नोटिस भेजा है कि अच्छा आप विदेश गए थे क्या, सो आप बताइए अपनी इनकम के सोर्स, which in a way will help us also, so they will be more prone to regulation. सर एक तरफ तो सरकार अपना प्रचार करवा रही है उनसे और आपको लगता है एक्शन होगा? नहीं, प्रचार कोई नहीं करवा रही सरकार। सर जो डिसकंटिन्यू सर जो डिसकंटिन्यू करने वाला प्रोसेस है उसमें हम सभी दो चार होते हैं और उसमें बहुत ज्यादा मानसिक ताड़ना भी आता है। कौन सा वाला? डिसकंटिन्यू सर्विस अनसब्सक्राइब वाला, हाँ यस यस। तो उसमें सर जैसे कि हमने उबर, तो मैं आपके साथ हूँ, मैं भी उससे प्रताड़ित हो चुका हूँ। अभी भी एक मेरे घड़ी में बताता रहता है, वॉक लाइफ करके कोई है, मैं इसको 1 साल पहले से डिसकंटिन्यू कर चुका हूँ। तो थैंकफुली वो पैसा नहीं ले रही है, बट वो सुबह सुबह मेरे से पूछती है कि कल आपने कितने स्टेप्स चले। तो मैंने कहा भाई मुझे पता है कितने चले, बट वो अभी कुछ पूछ रहा है। सो इसको लेकर भी हम कुछ कर रहे हैं क्योंकि भारतीय उपभोक्ता ये है ना, इससे बहुत परेशान है। ये है, ये 9 का हिस्सा है सब। मैंने आपको शायद निवेदन किया, आप सबसे बड़ा यही है, सब्सक्रिप्शन ट्रैप इज द बिगेस्ट एंड द वर्स्ट डार्क पैटर्न। ये मैंने निवेदन किया उस टाइम आपसे, एंड यू आर राइट। कई लोग बता रहे हैं शर्म के मारे, बस सब इन्हें झेल चुके होंगे। Yes, sir. In your interaction with the industry, did they give you any assurance about the timeline when they will comply to this? So they gave a blanket assurance that first we will identify whether we are doing anything like this, because if you realize that Amazon and Flipkarts, the people who assembled in Mumbai were India chiefs, but their patterns, their websites, everything is globally designed, and the practices are globally, developed. So they said, and we agreed with them. They said we'll go and check, sir, and we will tell our people who do that to refrain if it exists, and we'll comply. Actually, there was I'm not just saying it here. Actually, there was an agreement in the room. He was there, I was there. और ये डार्क पैटर्न में अभी तक इंडिया का कितना पैसा मतलब बिना पूछे चला गया? So even in email account and all, we can't unsubscribe. Suppose if you वो भी है, want to that is also a dark pattern. बट उसमें यह है कि हमारा जो वो है ना ज्यूरिसडिक्शन, वो कंज्यूमर तक रिलेटेड है। तो कंज्यूमर की जो परिभाषा है, जब आप पैसा देके कुछ सर्विस या गुड्स ले रहे हो, बाकी सब तो फिर वो आईटी मिनिस्ट्री को करना पड़ेगा। वो तब उस शर्त पे मिलेगी जब आप इसको टमाटो से ज्यादा प्राथमिकता दोगे। ये टमाटो से ज्यादा होगा। सब करेगा ही टमाटो से ज्यादा ये, because you have mentioned EU and the US. टमाटो तो एक ही बैठा है, पांडे जी बैठे हैं टमाटो के लिए। हाँ, आपके साथी मिले थे हमें वहाँ। Your people met me there in Mumbai. पर इतना वृहद रूप से नहीं किया होगा आपने। लेटर से वार्निंग, लास्ट वार्निंग की तरफ से लेटर भी गया है। तो सर वो अक्सर यही करता है, सामान मंगाइए, कहेगा अप टू 2000 2 रुपए की चीनी फ्री। हाँ। तो अब क्या है कि आपको सामान तो मंगाना है, समय नहीं है। सामान 1900 का ही है, फिर आपने एक और खरीद लिया। और ये टमाटर भी इसमें से ही आ रहा है। मैडम वो जो हेल्पलाइन नंबर है ना, फर्स्ट आप रजिस्टर कराओ। वो तो फिर सर एक चीज है ना कि आपको मेरे जागो ग्राहक जागो, अपना दिमाग भी लगाना चाहिए। हम कंपनी को एग्जैक्टली, तो ये मैंने पहले भी कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें कंज्यूमर का, नहीं सीरियसली, अवेयरनेस, सेंसिटाइजेशन, एंड इट इज आवर जॉब एंड योर जॉब आल्सो। We treat you as partners to create awareness. So one question, so apart from like on calls, on crank calls, blank calls, and recorded calls, there have been several notifications issued by TRAI, TOT, but no action is being taken. Also, there are recorded calls at any given point of time during the day. Is there any action being mulled on that front? So that is TRAI's domain, and we are in touch with them. We have told them many consumers are facing this problem. And they are coming up with guidelines. I think they are applicable from tomorrow itself, 1st July से कुछ कर रहे हैं, but I'll have to check with that. कुछ कर रहे हैं ना 1st July, 13 से, मतलब जुलाई में ही कुछ कर रहे हैं। I think they have done a lot of homework on this. They have taken data, कुछ कर रहे हैं। So let's come to tomato. जो मैं नहीं चाह रहा था वो। So tomato is a very interesting food item. We'll tell you what is the scenario. प्राइस की बात हो रही थी, आप लोगों में से भी बहुत
आकर्षक रूप से लिखा 2-3 दिन पहले, बड़ी बड़ी टमाटर की फोटोएं छापी फ्रंट पेज पे। बट आई वांटेड टू हाईलाइट वन थिंग, ये जो फिनोमेना है ना इंक्रीज का, ये दिस टाइम ऑफ द ईयर it happens every year, and we'll also try and explain why. So we call it in the language of economists sitting here, we call it seasonality. So every commodity in every country, which is an agriculture commodity, goes through a seasonality in the price cycle. So if you see around the month of May, June, ये 23 है 2023, ये 2022 है, ये 2021 है, 20, मतलब मोटा मोटा एक समय ऐसा होता है जब, and in the next slides we'll tell you why it happens, the prices reach a very high level. So in June also it reached this high level. अभी तो यहीं तक पहुंचा है, अभी आगे नहीं बढ़ेगा इसके, बट सो एक पॉइंट तो ये मैं निवेदन करना चाह रहा था कि देयर इज अ सीजनैलिटी इन कमोडिटी प्राइसिंग। नेक्स्ट, अब ये देखना पड़ेगा कि इंडिया में टमाटर कैसे प्रोड्यूस होता है। किस ये वाले जो फर्स्ट बिग रो इज साउथ एंड वेस्टर्न स्टेट्स, इसमें हमारा लगभग 50, 55, 60% टमाटर होता है। जो ग्रीन है वो है प्लांटिंग और ऑरेंज इज हार्वेस्टिंग। सो इफ यू सी प्लांटिंग गोज ऑन एंड देन देयर इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग बड़ा इसके साइकिल बड़े इसलिए हैं बिकॉज for those of you who are not familiar with tomato plantation, unlike dal, chawal, gehu, this is not one picking. No. So the plant is there and you pick one, उसी में एक पका हुआ है, एक फूल है, एक आधा कच्चा है, so you can do multiple pickings 3-4 pickings from a plant. So that is why these lines are longer. So this is south and western states, this is north and eastern states, and this is hill states. Green is planting, this is harvesting. So what we are trying to say is at the bottom is spread across the country, and in these regions, if there is a local vulnerability of weather, which has become very prevalent in the recent times because of climate change issues and many other issues, this gets disturbed. Now why this gets accentuated is, unlike wheat rice pulses, you cannot store it for a long time. It's highly perishable, it has a lot of water content, and transportation is also a big issue. Because of the water content, it is so susceptible to the shocks of the vehicle in which it's being transported. So you cannot store it for a long time, you cannot transport it over long distances because of the inherent vulnerability of the commodity. So this accentuates the problem further. The bottom one is very important, that June to August and October, November are lean productions. And that is why, can we go back to the slide? That is why if you see, उसी समय price बढ़ती है. Next. अब ये है कि कहाँ पे होता है टमाटर? जो डार्क ब्राउन वाले हैं वहाँ पे ज्यादा होता है। जैसे इंडिया का 14% लगभग एमपी में होता है, 7.25% गुजरात, 6 महाराष्ट्र, तो ये 5% से ज्यादा वाले स्टेट्स we have shown in dark brown, and नॉर्थ में थोड़ा कम होता है. So this has to be carried from here to here, and depending on, और जैसा मैंने पिछली स्लाइड में निवेदन किया, सबका सीजन अलग अलग है. So because of the spread like this and the spread across the calendar, it further complicates the problem. And that gets further compounded because of the storage and transportation issue. So it's a complex problem, but we are handling it. You don't have to worry too much about it. These are some of the other facts. तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? एक तो आज सुबह ही हमने ये लॉन्च किया. This is like a hackathon. So we said कि we are asking the youngsters, the students, the researchers, the startups, the professors, the people in the industry, कि भाई हमको नए तरीके बताओ ये 3 चीज करने के. Primary processing, storage and valorization. Valorization is value addition. कि किस तरह से टोमेटो की जो स्थिति है उसको भारत के परिप्रेक्ष्य में कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है. Next. ये आज सुबह ही लॉन्च हुआ है.
So, what is the aim? Aim is to develop innovative and cost-effective technologies. Pre-production is important. Primary processing, post-harvest, storage, and valorization. And give a solution. We have done similar thing in onion, which was very successful. But I must confess here, these things take a longer time because to develop an idea, then to develop a prototype, then to select prototypes which can be scaled up. It's a long process, but once it is established, it will help the economy a lot, especially when it pertains to these products. Next. So 4 आइडियाज हैं और इसमें हम सब पुरस्कार भी देंगे अच्छे आइडियाज को प्राइमरी प्रोसेसिंग में पोस्ट हार्वेस्ट में design of storage structure. This is very important. This played a very important role in onions also. Onions के storage में there are only 3 parameters: temperature, humidity, and air circulation. So I don't know people who are from the Maharashtra part of the country. There are a thing called kanda chawls. So they are like railway berths stacked on top of the other. जिसमें in a perforated kind of storage, onions are kept. And then the second level onions are here, but दोनों लेवल के बीच में एयर सर्कुलेशन के लिए गैप रहता है और नीचे जो स्टोरेज रहता है उसमें भी स्मॉल परफोरेशंस होते हैं ताकि चारों तरफ से हवा आती रहे तो उससे अनियन का जो शेल्फ लाइफ है वो थोड़ा ज्यादा होता है. So that has come after a lot of iterations and research and also based on conventional knowledge of the community. So we want similar ideas in that. They are of course already happening, but we want it to improve and go to the next level of this. Next. So 4 track है 4 है कि 2 track? 2 track है इसमें. One is for students, researchers and faculty members. And second track is for industries, startups, MSMEs, partnerships and professionals. Because they have lesser resources, so we thought let's not mix the two. That is more for giving rewards and prizes and nurturing these ideas. पहले आइडिया मांगते हैं वो आज से शुरू हो गया. We'll give it about 45-60 days. Then we have a set of experts which we have identified from across the country, including the Tomato Research Institute, renowned scientists, some retired big shot scientists. They will shortlist the ideas, and then from here the important thing begins. From idea to a proof of concept. Idea कई बार हवा में भी होता है. So can you have a proof of concept from the idea? And then proof of concept भी हो गया, but can you develop a prototype from there? And then we reward at that stage also. Prototype से product and product से scaling up. Product तो बड़ा अच्छा हो गया, but वो एक ही कमरे में है. How do you spread it across the country, across all the regions where tomatoes are grown? So we're planning this, and we are doing this with all the primary research institutions across the country. And Ministry of Food Processing and Ministry of Agriculture and all stakeholders. So and our partners in this innovation challenge is AICTE. Onion वाला भी हमने किया था because they have adequate influence and engagement with all the educational institutions. ये आज हमने launch कर दिया. So if you have any ideas, can join the. Sir, onion वाले implement कब है? हाँ, onion वाले 4th stage में पहुंच गए. 13 ideas shortlist हुए हैं. और एक चीज और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कई बार जो हमारा main idea होता है, उससे related ऐसे idea मिलते हैं जो बड़े interesting होते हैं. I'll give you 2 examples. onion का process लगभग 1 साल तक चला. अभी final 13 लोगों को scientist और industry nurture कर रही है. एक idea निकला कि onion का जो छिलका होता है, peel, that can be used for filtering water. So I don't know if you have seen the peel. It is a perforated thing, and IISc Bangalore signed. IISc Bangalore? Christ College, Christ University. Sorry, Christ University in Madras. Bangalore. Sorry, Christ University in Bangalore. The scientist has told us, and with a lot of facts and supporting data, that if you use it for filtering water, then industrial waste water, if you take it through globules of onion peels, then the water that comes out on the other side is not potable, but it can be used for agricultural purposes. It will not harm. So it is filtered to that extent.
So this is one of the ideas that we got, which is incidental to onion storage, but we are nurturing that idea through experts. One lady, young scientist from Chandigarh, IIT Kolkata. II, Kharagpur. IIT Kharagpur, sorry. She said that, sir, with the onion peel, she can derive a chemical which can be made, which can be used in developing a vaccine for the lumpy disease for the cattle. So she has done some initial research and we are mentoring, nurturing her to develop it further along with the experts. तो ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि कई बार अनियन का शेल्फ लाइफ बढ़ाने के साथ साथ कई बार इंसिडेंटल फायदे भी हो जाते हैं, इसीलिए इनोवेशन को बढ़ावा देना और बाकी दुनिया जो कर रही है उसके साथ एक्टिवली एंगेज करना हमेशा फायदेमंद होता है। तो इस पे अनियन भी चल रहा है और टमाटर भी शुरू हो गया। और कुछ खाने में आप पसंद हो तो बताइएगा। Sir, looking at the it is seasonality, of course. But looking at this year's rain, I mean, rains were delayed. Again, rains have picked up. So, what do you expect? As usual, prices will fall from August. Yes. Which commodity? Tomato. Oh yes, it will fall. Yeah. वैसे भी एक I don't know whether many of you are aware, the all India average yesterday, I'm talking all India average, was 49 rupees, and all India average on the same date last year, on 29th of June 2022, was 51.5 rupees. I'm not justifying the rate, but I'm just saying this also proves that seasonality. Yes, sir. So one of the slides said, like July, there's harvest is taking place only in the hilly states. Yes. So, I mean, are we expecting a Yes. further rise in the price? No. In fact, So in fact, if you noticed in my conversation with Lakshmi ji of PTI, I said that from Sirmaur and Solan district in Himachal Pradesh, the crops will very soon start coming, the crop, and crops ही क्यों याद आता है? So domestic problem. So the prices in Delhi will cool down immediately when Sirmaur and Solan supplies. But in other parts of the state, for उस example, और अलग भी देखा होगा आपने? Gorakhpur recorded the highest price, 121. I mean, in one state itself, there are 3-4 prices from 10. So hilly areas वहाँ भी हैं. So I belong to one of the regions, the Tarais. वहाँ भी टमाटर होता है, वहाँ से चला जाता है वहाँ. So within 15 days you can safely say. Yes, it will start coming down and it will reach normal levels maybe in a month or so. And sir, second question, sir, other than tomato, around 8 products, I mean 8 essential products have seen price rise from 0.5 to 100% in the last 1 month. So what are your plans? तो आपको प्रोडक्ट का नाम बताओ तो मैं प्लान बताता हूँ. So pulses, milk. तूर का वो स्लाइड है कि नहीं? So I have a slide. I can tell you that. So Toor, the issue was low production. Against 39 last year, we produced only 30. I'm talking lakh tons. 20%. So we consume about 44, 45 in India. So every year we have to import. So this year obviously we'll have to import more. So where does the import come from? It comes from Myanmar and it comes from East African countries. So the East African crop will start arriving from August. So it will cool down. And we have decided, Guiteji is the architect of that decision, that from our buffer, we will also release 50,000 tons in the market by way of more messaging that if the prices go unduly high, we imposed stock limits on 2nd, and unlike what Pooja Das and Sandeep ji reported, I read their items very carefully. From the day I had that graph, it is there in my phone. From the day the stock limits, there is a downward trend, although they reported otherwise, but I'm okay. I mean, we are subject to correction. So just to confirm, you said India will have to import more pigeon pea this year. मतलब हिंदी में तूर बोलते हैं, पिजन भी बोलते हैं उसको. हाँ, अरहर ही बोल रहे हैं.
कितना इम्पोर्ट करेंगे? 12 लाख। 12 लाख मीट्रिक टन। ये फिजिकल ईयर था, ये दिस फिजिकल ईयर है। हाँ। So I'll tell you the ये है देखो पोजीशन। सब दाल को एक मिनट मुझे बोलने दो, मेरा बोलने का समय। दाल को एक्चुअली हम लोग को एक साथ देखना पड़ेगा, बिकॉज दाल का जो कंजम्पशन है उसके दो महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। वन, इट इज प्राइस सेंसिटिव, अगर ये वाली दाल महंगी हुई तो लोग दूसरी खाने लगते हैं। The other, it is the preferences are different in different parts of the country. So broadly, out of the 100 consumed in the country, 46% is chana consumption. So आधे देश को चना ही cater करता है as chana dal and as other products of chana. Then there is about 10% of tur and urad and masoor. And then there are other pulses, moong. So if you see chana, it's all words a constant है. There's the chocolate. इसमें ये भी देखना पड़ेगा. Somebody talked about inflation कि हम MSP किसान का भी 2% बढ़ा दिया है. So जनरली जितना MSP बढ़ता है मार्केट obviously बढ़ जाता है because आपने सोर्स का प्राइस ही बढ़ा दिया है. Despite that, we are almost at the same level per kg. Per kg, this is rupees. This is all India average, by the way. मसूर MSP 8% बढ़ा है, लेकिन हम पिछले साल से 5% कम है। I tell you why. Because unlike tur, our domestic production of masoor increased to 16 lakh tons. We still need to import because we consume about 22 lakh tons. We import from Canada and Australia. We also monitor their crops, and their crops there have been very, very good. So masoor supply is abundantly available. So this might come down further. Last year इस समय 96 था, अभी 91 है. We are like 5% lower. Moong. Sir, can you repeat that masoor wala? What is the consumption input? So we produce this year. We produced about 16. We consume about 22, mostly in eastern parts of the country. So we will require 6 to be imported. Last year we imported about 11 lakh metric. Yes, sir. But where do we import from? We import from Canada and Australia, and both the places this year's crops are in excess of 25% of the previous year in the respective countries. So situation is very comfortable. There is no shortage. Moong, MSP to support the farmer is increased by 10%. It's huge. The price is up by 7, which you have to compare with this 10. ये वैसे अभी और कम आएगी because of bumper production in Madhya Pradesh, the Narmada Basin, and because of very good sowing now happening in Rajasthan after the storm. So this will further come down. ये थोड़ा सा भी हमको तकलीफ दे रही है, almost 6%, but पिछले साल के मुकाबले लगभग 24% ज़्यादा है, but ये कम हो जाएगा after the African imports start arriving. And as I said, because of weather issues and wilt disease, the production has been low. And urad MSP is increased by 5%, price is up by 7%. So the correction of that 2% will also start happening. कुछ म्यांमार में कुछ लोगों ने होल्ड कर रखी थी, and Vitaji tells me that Myanmar से import have increased in June month, और जो वहाँ रखी हुई थी now because of the rains there they can't store, so they will have to sell it to India. Nobody else eats this in any other part of the world. So if you call come here, हमारी crop भी दिसंबर तक आ जाएगी, इनकी crop भी आएगी, तो ये price भी जाएगी. So this is the overall. But if you see in terms of consumption, even आधे देश में तो 50% लोग ये खा रहे हैं, ये लगभग 7 से 8%, ये भी लगभग 8-10%, ये भी लगभग 10%, mostly south, ये भी 7 से 8%. Plus other percent. Tour import last year कितना किया? Tour import last year कितने किया? 8.9. 8.9 lakh. हर साल जरूरत पड़ती है. So this year you saying 23-24 lakhs? नहीं, 12 No, 12 lakh. 12 for
for this fiscal Ah, year. This fiscal year. And so far, how much we have imported? We imported about six more will import. Okay, sir, last year how much you said, sir? 8.9. 8.9. देखो तो एकदम A+B टाइप वो है, domestic production, sorry, consumption minus domestic production is what we need if it is available. So the only thing that is hurting us is tur dal. Nothing else. मतलब अभी अगले महीने से ठीक हो जाएगा। Yeah, I mean. हाँ? I mean, do they have the capacity to give us? Yes, वो भी ग्राफ है हमारे पास। You want to see that? सर दो सवाल है, एक तो हमारे हर पूर्वी अफ्रीकी देश में कितना अभी प्रोडक्शन हो रहा है और वहाँ की सैटेलाइट इमेजरी वो सब डिटेल रखते हैं अपने पास, बिकॉज वी हैव टू मॉनिटर दैट, क्योंकि वो भी जरूरी है। वेरी गुड क्वेश्चन। सर एक तो आपने बोला कि 50,000 टन दाल आप बेच रहे बोले बाजार में एट व्हाट रेट, और दूसरा कि ऑक्शन रेट, तो बेस रेट यू हैव नॉट डिसाइडेड। वी विल नॉट, वो अपने आप अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी जो है ना उनका एक इंटर रिलेशन होता है डायनामिक, जैसे ही मार्केट में ज्यादा आएगा वो अपने आप कम होगा। तो सेकंडली देयर आर मैनी स्टेट्स जहाँ पे आपके प्राइस एवरेज से काफी ज्यादा है, जैसे आप बता रहे हो 128 एवरेज है, लेकिन अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो 145 148, वो तो सुपरमार्केट में ज्यादा होगा बिकॉज देयर इज पैकेजिंग। ये तो आपके डाटा है, आपके कंज्यूमर मिनिस्ट्री का डाटा है कि दिल्ली में 145 है और चेन्नई में आई थिंक 160 है। सो वो थ्रू आउट द ईयर बड़े शहरों में प्राइस ज्यादा होती है। उसमें सर एक रिटेल वो वाला इनको ग्राफ दिखा दो ना, वो वाला। उसमें सर ये पूजा दास और संदीप को एक ग्राफ दिखाना जरूरी है। आगे बढ़ो जरा इसके। नहीं, ये देखो, ये हाँ, ये एक मिनट सुन लो संदीप। देखो पिछले महीने से ये दिस इज तूर, ये रेड और लेमन इज अ वैरायटी ऑफ तूर, इट हैज स्टार्टेड कमिंग डाउन। नंबर 1, नंबर 2 नेक्स्ट, जो बर्मा के CNF रेट्स है ना, म्यांमार के लेमन तूर व्हिच इज व्हाट वी ईट एट होम, ये आल्सो कम डाउन द लास्ट 1 month. Third, which goes against what you wrote today and what you wrote yesterday, is इन्होंने लिख दिया कि स्टॉक लिमिट से कुछ फर्क नहीं पड़ा, इन्होंने भी आज लिख दिया, but you see this, we put stock limit here and you see the trend in wholesale prices, it is down by 2.4%, 5.5%, 1% and this. All varieties, Maharashtra Latur, Maharashtra Akola, Karnataka Gulbarga, Myanmar. This is where we put stock limits and do the trade. Chalo next. Sir, what is the situation in Moong? How much amount you are importing? मूंग इंपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्शन है, बल्कि 7 फरवरी 2022 से हमने मूंग का इंपोर्ट बैन किया हुआ है। We don't import. It is banned actually. We have so much production now because of huge growth that Madhya Pradesh has seen in Narmada Basin. And moong, by the way, is a small crop. It is very easily grown, 45 to 60 days में हो जाता है। So it is easy. What is the consumption of moong About 8% of our total, 8 to 10. and production approximately? मैंने बोला ना sufficient है, इसीलिए हम import बंद किया हुआ है। तो 37 है प्रोडक्शन है। We are self-sufficient in it. Can we go back to the first one? Or demand? One सवाल है। First one, जाओ, first graph, first slide, first graph और slides. slide. इससे पीछे पीछे है This is the third one. और पीछे Yes, This. this is red and lemon tour. तो भैया थोड़ा करेक्शन भी छाप देना कल पूजा। नहीं सर, what I was saying कि आपने देखो एक पैराग्राफ लिख दिया, सुबह सुबह मेरे थोड़ा दिल में चोट भी लग गई कि स्टॉक लिमिट से कुछ नहीं हुआ। अरे ये दिख रहा है ना साफ साफ, उसने भी लिखा। नहीं, उसमें ऐसा बता रहा हूँ, आपका जो प्राइस तो मेरे से पूछ तो लिया करो लिखने से पहले इस तरह की चीज। अब वो एक क्लैरिफिकेशन है सर, वो प्राइस पॉइंट सेल का आपका जो साइट है, उसमें एक गो टू मॉडल प्राइस ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी, दैट विल शो डिफरेंटली। देखो I'll tell you there are how do the prices behave। आप तो एक्सपर्ट हो यार, you know more than I do। देखो एक तो मंडी की प्राइस होती है, ठीक है, ये उसका वो है the 5-day average, moving average। Then there is a wholesaler in the town जहां से रिटेलर खरीदता है, तो उसमें थोड़ा सा of course मार्जिन का फर्क होगा। Nobody is here for charity, everyone is making money। Then wholesaler to retailer, ये जब कम होता है ना, इसका इफेक्ट जो वो साहब बता रहे थे दिल्ली में 148 है,
उसका इफेक्ट 10-15 दिन बाद आता है, बिकॉज दिस हैज टू बी ट्रांसलेटेड. मैं रिटेलर हूँ, मेरे पास स्टॉक खरीदा हुआ रखा है इस पॉइंट का, मैं प्राइस थोड़ी कम करूँगा. आई एम नॉट दैट डायनामिक. बट मैंने जिस दिन ये स्टॉक खरीदा उसके 10 दिन बाद जो मैं बेच रहा हूँ, सो देयर इज अ ट्रांसलेशन, देयर इज अ डेल्टा ऑफ टाइम. चाय पियो. आप पीजिए सर. और भी पी लो. वो चाय नहीं आई. ला रहे हैं, सॉरी, दे जस्ट गेटिंग इट. सर, टेक्निकलिटी से ये तो So how is the onion situation, sir? Sorry, Onion, onion harvest yes. is as good as last year. It's a bumper harvest. This year we are estimating 319 lakh tons, which is compared to 324 of last year. It's the same thing. So onion happens in two phases. Rabi onions we have got, which comes in March, April, is 219 tons. The remaining 100 will come in Kharif and late Kharif, which will solve our winter problem. But sir, Now the Bagwani Kharif- estimated is given the different data, sir. कौन है बागवानी? सर वो फर्स्ट एस्टिमेशन जो दिया हॉर्टिकल्चर है, कितना है? सर उसमें कम दिया है, उसमें उन्होंने अरे उन्हीं से पूछ के बता रहा हूँ मैं. तो सर प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं? कहाँ बढ़ रहे हैं? वो तो Kharif product. पैसे नहीं बढ़ रहे. लासलगांव में बढ़े हैं. लासलगांव में इसलिए बढ़ रहे हैं कि जो पहले दिन ग्लट आया ना, वो 9 रुपए था. 9 रुपए इज अनवाइबल. 319 is the production of the year. Yeah, that is the last year. नहीं सर, 324 is the last year. No, the crop year is. नहीं, एक मिनट, क्रॉप ईयर नहीं, मैं कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूँ. So in calendar year, last calendar year was 324. This calendar year includes Rabi, which is already arrived, plus Kharif and late Kharif, which will arrive now, is 319, which is just 1 or 2% different from what happened last year. Out of which the big supply of 219 is already with us. उसी में से हम ये 3 लाख खरीद रहे हैं. और जो remaining 100 है वो August, September, October, November, because now farmers are very smart. They sow at different points because they also realize कि market में availability बढ़ जाएगी. So we have also, just last sentence, we have also requested agriculture कि ये वाला जो production है ना खरीफ का, which is the remaining 100, because it plays a very critical role during the festival time and during winter जब हम लोग सब ज़्यादा प्याज खाते हैं for obvious reasons. So उस time availability के लिए please give more incentive and impetus to kharif onions, which in yesterday's cabinet secretary sir's meeting also this point was emphasized to agriculture. I'll tell you what the issue is. Like the tomato thing, the moment you ensure availability across the calendar, the problem is solved. Because these crops are seasonal, at some points there'll be deficit. So if you spread, of course, the variety has to be aligned to the weather conditions. If you spread the production across the year, then it's easier. Plus storage of the bulk. Yes, sir. Yes, ma'am. सर ये है प्याज का उत्पादन पिछले वर्ष के लिए 31.59 मिलियन टन की तुलना में इस साल अब तक 31.01 मिलियन टन का अनुमान है. तब कितना फर्क पड़ा? 315 लाख से 310 लाख. हमारा एस्टिमेट है 324 हुआ था पिछली बार और 319 होगा इस बार. कोई फर्क नहीं पड़ा. इट गेट्स तो मैं अनियन की प्राइस जो है पूरे पिछले वर्ष 35 रुपए से आगे नहीं गई ऑल इंडिया एवरेज थ्रू आउट द ईयर. उसी बात पे एक समोसा खा लो, हमसे खुश हो. Price monitoring using data says that only there is a 11% increase compared to last 6 months. कब कौन से में? हाँ. So 11% of 30 rupees is 3 rupees. So what I made the statement was, throughout 2022, the all India average never went beyond 35 rupees, which used to go to 60, 70, 80. Only because of 100 तो मुझे पता नहीं, but only because of the buffer that we had, and the market knew that in case they don't behave, we'll infuse in the market. And this kind of a stability was there for in many years. Right? Many years, yes. but अभी और एक महीना टमाटर
₹100 खरीदना पड़ेगा। एक्चुअली सफल में खरीदा 89 रुपये। आधे का भी प्लस जब उसको मार्केट को जब ग्रोअर्स को पता लगता है ना ज्यादा है दे स्टार्ट सेंडिंग मोर बिकॉज यू कांट होल्ड ना खराब हो जाता है तो आएगा दिल्ली में ही बिकता है Within 15 days. नॉर्मल मार्केट्स में भी ना कल हमने टीवी जब देखे थे तो 80 में मिल रहा था। आज छुट्टी तो मैं बता और वो भी दिल्ली में थोड़ा है सफल में। राइट थैंक यू वेरी मच थैंक यू। पहले इसका बाइट उसके बाद पहले ये बाइट पहले आपके बाइट कर लीजिए उसके बाद बाइट दे दिया ना कल सर ये नहीं सेटिस्फाई हो सकते इंडियन वोटर हो जाएगा ये नहीं सेटिस्फाई हो सकता